So what is observed, and this model is basically developed in 1945 to 1950. So what is observed when any nuclei contain proton number 2, 8, 20, 28, 50, or 82. Also, if any nuclei contain number of neutron, that is 2, 8, 20, 28, then 50, 82, 126. So if any nuclei contain this number, either this number of proton or this number of neutron, then they are most stable. Hence, then nuclear physicists try to predict, and they assume that nucleus must have some cell structure, like electron that is orbiting around that electronic orbit. They have cell structure, like right 1s2, 2s2, 2p6, like that. So similarly, nucleus has cell structure, and at this in this number 2, 8, 20, that cell is completely closed. So that's why they are more stable. Okay. Apart from this, the experimental observation was so number of isotones of isotones are maximum when number of neutrons is 50 and 82. So both are magic number. So number of isotones are maximum when that number of neutrons are 50 and 82, and both are magic number. Also, and you know that what is isotones, right? That we have discussed. It is observed that number of protons, sorry, number of isotopes are maximum when that atomic number Z is 20, 50, and 82. So all these three are magic number. So that's why the number of stable isotopes are maximum here. Okay. In addition, most abundant nuclei in the nature is, right, oxygen 816, calcium 20, 40. So see, this also contains magic number. So number of protons and number of neutrons both are 8. So this is a doubly magic number. This is also doubly magic number, contains doubly magic number. So that's why they are most abundant in nature. Also, if you notice, there are 4 radioactive series, right? So let us write this radioactive series. Mass number, then you have series, then parent nuclei,
then stable daughter. Stable daughter, okay? So mass number, when mass number is 4n, mass number is divide by, or mass number is integer multiple of n, 4, where n is integer. So this series is basically thorium series. So parent nuclei is thorium 90 232, and daughter is lead 82 208. So this is the series, parent nuclei decays and end product is stable, and that is Pb 82 208. Another series is 4n plus on, and this is Neptunium series. Okay, so that parent nuclei is, yes, मास नंबर सीरीज के बाद वो क्या लिखा है? हाँ सर वो मास नंबर सीरीज के बाद वो क्या लिखा है? स्टेबल ये मास नंबर, यू कैन राइट इट. हाँ, फर्स्ट लाइन सर, फर्स्ट लाइन सर क्या लिखा है? फर्स्ट लाइन मास नंबर. तो इसको देखो, ये इसका जो मास नंबर है, दिस इज डिवाइडेड बाय 4n, n इज इंटीजर, है ना. सो डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा. देखो 232 208 बोथ, है ना. इसका देखो नेपच्यूनियम का, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 93, मास नंबर है 237. तो इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमेनिंग रहेगा, है ना. इसका जो स्टेबल डॉटर न्यूक्लियर है बिस्मथ 83 209. तो इसको भी अगर डिवाइड करोगे 4 से तो 1 रिमेनिंग रहेगा. तो दिस इज, दैट्स व्हाई दिस इज 4n plus 1 series. Then you have 4n plus 2 series. This is uranium series. Okay, so that you know uranium 92 238, and its stable product is Pb 82 then 206. And then you have actinium series 4n plus 3. Okay, so here you can, if you multiply divide, you will get 2 remaining. If you divide by 4, you will get 2 remaining for parent and stable daughter in both cases. So this is your actinium series. Okay, this is AC, and its atomic number is how much? 89, right? And mass number is 227, and end product is Pb 82 207. Now we see all stable product. Here you see in thorium case, product atomic number is 82, right? This is magic number. If you calculate that number of neutrons, that it will be 126. Again, it is magic number. Okay, so stable product contains magic number. Here also, if you calculate, although proton number is not magic number, but if you calculate that neutron number 209 minus 83, it is 126. So again, it contains magic number. That's why it's stable. Pb, its atomic number is 82, so it also contains magic number. And last for that series is actinium. Again, end product contains magic number. That's why they are stable. Okay. So now, सर मेरा नेटवर्क थोड़ा लूज हो गया था सर. तो हाँ. सर कैन यू एक्सप्लेन दिस, मतलब ये मतलब 50 to 82 it is observed that number of isotons are maximum. Yeah, here Okay. 50 Yes, and sir. 82 number Yes, of sir. isotons are maximum. Here number of isotons is 6, here 8. Okay, so these are maximum. Why? Because this is stable, right? This nuclei is stable, so they will not decay. That's why number of stable nuclei is maximum here. And for these Okay. cases, so this is not decaying now. That's why that they are stable. So observable number of stable isotopes are maximum for this
number, and for isotones, the maximum for this number. Okay, sir. Okay. And so this fourth point, what do you have told, sir? 4 and So if you see, thorium. there are radioactive series, 4 radioactive series, right? Okay, sir. Thorium, neptunium, uranium, actinium. In all radioactive series, when they are decay, there is a chain, right? Many decay process happen. But end product, these are stable. They will not further decay. So these are stable. These are known as stable daughter. So why they are not decaying? Because they are containing magic number, and that's why they are stable. Okay, if you see this fellow contain PB82208, both proton number and neutron numbers are magic number. Here proton number is magic, neutron number is magic number. In this case, both cases proton number is magic number. So that's why they are stable. They are not decaying. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. Okay. Now, to develop that model, they made some assumption, and before they gave this assumption, their aim is to calculate the angular momentum of nucleus, magnetic moment, spin, parity, and quadrupole moment. So what are the assumptions they made? So first assumption, each nucleon is moving in its orbit. Okay, inside nucleus, okay, comma, independent on other. That's why, so the orbital motion of each nucleon is independent on other. That's why this is known as single particle cell model. Okay. Second is, each orbit has well-defined energy and angular momentum. Okay. And this angular momentum and energy is determined by potential, that is VR. This is actually centralized potential. Centralized potential. Okay. So what is actually VR? So you see, suppose you have one nucleus, it contains a number of nucleon. So suppose it contains a number of nucleon. So now suppose you are taking one nucleon. So what is the role of other nucleon, other A-1 nucleon? So they are basically creating VR. This is centralized. Okay. So this nucleon is actually orbiting under the influence of this VR. So if you take another nucleon, so remaining A- nucleon will create some centralized potential, and this nucleon will orbit, make orbital motion under this VR. But main challenge is VR potential is not known. So complicated. Sir, Yes. so this point, can you repeat, sir? Yes. So you see that each orbit, like if you remember in electronic case, so 1s2, 2s2, 2p6, like, so each orbit has some energy and angular moment, right? So each orbit will have some energy and angular momentum. But how will calculate that energy according to quantum mechanics? You have to know potential, right? So that potential will give you energy, because Schrodinger equation, ultimately when you solve it, you have to use that Schrodinger equation. For that, you have to know that potential, right? So energy and angular momentum, everything can be calculated if you know that potential.
what is the role of form of potential. And this potential, since you are considering that nucleon is making orbital motion, so definitely this potential will be centralized potential. And that centralized potential, how will identify how they are making assumption. Suppose you have one nucleus, so you are taking on nucleon. So total, if there are total a number of nucleons, so if you are taking on nucleons, so remaining other nucleon will create centralized potential, this VR, and under this VR, this nucleon will make orbital motion. And similarly, if you take other nucleon, so remaining a minus on nucleon will create this VR centralized potential, and this nucleon will make orbital motion. Okay. Okay, it means Yes. that if we consider a single nucleon, other nucleons will create this potential. Exactly. Okay. Sir. Okay. Sir, we assume angular momentum is quantized here. Angular momentum is quantized. Yes, quantized. Because now we'll calculate this. Now main challenge, main challenge, you don't know that VR potential actually. So they try to use that simplest potential. So first they will they used infinite potential well. So first potential VR, what VR they have taken infinite potential well. Okay. Then this infinite potential actually predicted first three magic number. So this model failed. So this is not important for your exam point of view, but I'll discuss how this model actually developed. Then you have they have considered harmonic potential. Okay. Again, this potential only predict first three magic number, but they introduce. I'll come to that in detail. They introduced the concept of degeneracy. Third is Woods-Saxon potential. Okay. So this also predict first three magic number, but number of closed loops, closed cell, that is reduced when they are using this potential. Then lastly, they introduce that concept of spin orbit coupling. So this last point is very important. Actually, this is your important for complete prediction of your angular momentum and parity of any nuclei. Okay, spin orbit coupling. Okay, so let us discuss that infinite potential well first. So potential they have considered VR is 0 when R is less than R, and it is infinite when R is greater than R. Okay. So this kind of potential. Okay. So 0 to R, here the potential is 0, but at boundary it is infinite. Okay. This side your VR. So now they have used Schrodinger equation, h cross square by 2m. Okay. Del square by dr square u. Okay. Then VR, and another term will come. Since you are using that centralized potential, so another term will come. That is L into L plus 1,
h cross square divided by 2m r square. Then you have wave function, the state that is u, and that eigenvalue is e, energy eigenvalue, and your state function is u. Now at r less than r, Vr is 0, right? So this will be actually V of r, potential. So when that r is less than capital R, this term will be 0. So we will get h cross square divided by 2m del square by dr square u, your state. Then you will have only this term, L into L plus 1 h cross square by 2m r square. Then you have state u, and on the right hand side you have energy eigenvalue, then u. Okay. So this is similar thing you have noticed this kind of thing in solution of hydrogen atom. The solution of this equation is basically u of r, that is equals to r into JL K R, and JL K R is your Bessel function. Okay, this is your r. Now you see, when r is equals to capital R, okay, so there will be no state, right? Wave function must be vanished there. So it means capital R Bessel function JL K R, it should be equals to 0. Now it's L is angular momentum. So since R is not 0, it means JL K R must be equals to 0. So now we'll use when L is 0. Okay, so J0 K R, that should be equals to 0. And how much is that J? Okay. Another thing I forgot to mention here, K is how much here? K is root over 2me by h cross square. Okay. So J0 Kr is how much? Bessel function. So you have learned in this in your special function in mathematical physics, that will be say sin Kr by Kr, and that should be equal to 0. So it means sin Kr is 0 and Kr is how much? N pi. Okay. So K, if you substitute K is root over 2me by h cat square, then you will get E equals to how much? N square h cat h square by, and let us take n is inside n square pi square. H square 8 pi square m r square, right? And you will get like 1 square, 2 square, 3 square, and so on. Okay. So first 1 square means, since you have considered L is 0, so first state energy is 1s, second 2s, third 3s, and so on. Okay. So first state 1s means energy is h square by 8 pi square m r square. 2s means energy is 4 h square divided by 8 pi square m r square, and so on. So this is your energy of S state, and that energy is obviously it will be quantized because you are considering infinite potential well. Then if you substitute further L equals to 1, so ये जस्ट मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे डेवलप हुआ है, आपका एग्जाम के लिए लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है? Now if you substitute again JL Kr is 0. Now if you substitute L equals to 1, then J on Kr
that should be equals to 0, right? And J1 KR, that is how much? Sin KR divided by KR square minus cos KR divided by KR, and that should be equals to 0. So it means the if you solve it, if you divide by cos KR both side, and if you multiply it by KR, you will get tan KR equals to KR. And this kind of equation you got when you solve quantum mechanics finite for finite potential OL. So this is known as transcendental equation. And when the graphically when they solve it, they notice the energy value, that is h square by 8 pi square mr square into 1.43 square, then 2.46 square, and so on. So this state corresponds to, since you are considering L equals to 1, so first will be 1p, then 2p, and so on. Okay. Then they have further considered L equals to 2, L equals to 3. Sir, Yes. sir, J1 KR equals to 0. After this, how this expression came? Sin KR. This is known as Bessel function, no? You know that form of Bessel function in special theory, जो आपका special function है, वहाँ पे आप Yes, लोगों ने sir. पढ़े हो ना Bessel function? तो Yes, sir, yes, sir. J का जो फॉर्म है वहाँ JN के फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे just Yeah. L के फॉर्म में लिखो. Exactly, you will get this if you know that JN function, that special function, that form of J. Okay, sir. हाँ. और फिर उसके बाद ये उसी से ये एक्सप्रेशन आ रहा है. Exactly, ये Bessel function का फॉर्म है. Okay, sir. आप लोगों को आलोक सर पढ़ा है ना बहुत अच्छे से सब चीज, नहीं स्पेशल फंक्शन? यस सर. हाँ बहुत अच्छे से पढ़ा था सर. ठीक है, तो देखो आपका पहला जो स्टेट था ऑन एस है, उसके बाद ये एनर्जी आ रहा है ऑन पी, है ना? तो इस तरह से आपका एल का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लेके उन लोगों ने सॉल्व किया है. तो फिर सॉल्यूशन के बाद जो स्टेट मिल रहा है उसको अरेंज किया है. तो अकॉर्डिंग टू दिस infinite potential well, whatever they have got energy value, they arrange that state. So first state energy किसका मिनिमम था? ऑन का, राइट? देन आपका कौन सा है? ऑन पी. देन कौन सा है आपका? ऑन डी. देन 2s. देन 2p. on f, right? Then further 2p. No. On s, on p, on d, then 2s, on f, 2p. Okay. अब on s में कितना रह सकता है बताओ? on s में कितना रह सकता है? इसमें कितना न्यूक्लियन रह सकता है? Anyone? 2 न्यूक्लियन सर. Exactly, 2 रह सकता है, राइट? बिकॉज on s का स्ट्रक्चर देखोगे, दे आर स्पिन हाफ, सो ऑब्वियसली 2 रह सकता है. p में 3 होता है ना? आपका p में कितना रह सकता है? 6 रह सकता है, राइट? बिकॉज न्यूक्लियंस आर स्पिन हाफ. सो यहाँ पे 2 रह सकता है, यहाँ पे कितना रह सकता है? 6, यहाँ पे 10, राइट? यहाँ पे अगेन 2, 14, and then 6, and there are many more state. I am not writing this. तो देखो यहाँ पे ये आपका एक क्लोज सेल है, इसका कितना है? मैजिक नंबर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. ये एक क्लोज सेल है, 2 + 6 कितना आ रहा है? 8 आ रहा है. ये देखो 2 + 6 + 10 कितना आ रहा है? 18. तो ये मैजिक नंबर नहीं है, ठीक है? 2 को फिर फर्दर ऐड करो 20.
ये आपका मैजिक नंबर है 34 है ना, अगेन मैजिक नंबर नहीं है, फिर आपका 40. And there are many when they use that infinite potential well, so they observe many closed cell, but only they correctly predicted 2, 8 and 20, and the rest are failed to they failed to predict. Okay, then they सर have तो हाँ सर मतलब 1s 1p तो इसमें ऐड ऑन करके मैजिक नंबर आ रहा है, हाँ इट हाँ, मींस ये दैट आपका देखो जैसे आपका एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हो ना कि क्लोज सेल में आपका जब 2p6 हो जाता है तो मैक्सिमम मतलब वो क्लोज सेल हो गया. सेम थिंग जैसे इनर्ट गैस में पढ़ते हो वो सब क्लोज सेल है. सेम थिंग यहाँ पे देखो एक ये आपका सेल है एक, तो ये क्लोज हो जाएगा जब 2 होगा, है ना. एक सेल होगा, ठीक है, जब क्लोज हो जाएगा 6. तो जब टोटल न्यूक्लियर नंबर सपोज मान लो आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियर आपका 8 है, तो कैसे अरेंज करोगे? फर्स्ट आपका ऑन एस में कितना रखोगे? 2 रखोगे, फिर 2p में ऑन p में रखोगे 6, तो एक क्लोज हो गया यस ना सर, सेल. समझ हाँ गया. ओके, थैंक यू सर. हाँ ठीक. फिर फर्दर आपका आया है हार्मोनिक पोटेंशियल. ठीक है, तो v of r is half m omega square r square. Again they use that Schrodinger equation, h cross square divided by 2m del square by del r square u plus half m omega square r square plus l into l plus 1 h cross square divided by 2m r square u equals to e into u. Okay, and the solution of this equation is ENL equals to 2n plus L minus half h cross omega. Okay, and if you further rearrange 2n plus L minus 2 plus 3 by 2 h cross omega, and let us assume 2n plus L minus 2 is lambda, so basically lambda plus 3 by 2 h cross omega. Okay, now I'll calculate this energy for different ANL. Okay, so I'll calculate it. So I'll write lambda value, then n, then you have L, then orbit or orbital, then I'll write energy E, NL. So first write n. So n is, let us take on. ठीक है, L का वैल्यू आप 0 रखो, ऑन रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो. लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? So 2n, L is 0 minus 2. So when n is on, L is 0, lambda will be 0. Okay, for this case lambda will be how much? On. Then you'll have 2, 3, 4. So first state n is on, L is 0. It means orbital will be on S. Second, on P. Then you will have on D, because n is on, L is 2. So obviously for L2 it will be D, and for n equals to on it will be on. Then you will have on F. Then you will have further on G, right? अब इसका एनर्जी बताओ कितना होगा. तो जब ये रखोगे आपका एनर्जी ऑब्वियसली फॉर फर्स्ट स्टेट you'll get 3 by 2 h cross omega. Okay, so फर्स्ट स्टेट का ऑन एस का कितना मिलेगा एनर्जी आपको, बिकॉज लैम्डा इज 0,
So for this lambda plus 3 by 2, right? So lambda is 0. Obviously, this energy will be 3 by 2 h cross omega. Okay. Then you will have on P. For this energy will be how much? Since L is on here, sorry, lambda is on here. Obviously, energy will get 5 by Sir, 2. हाँ. सर यहाँ एल का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, मतलब हाइड्रोजन एटम में जैसा n-1 जाता है एल का हाँ वैल्यू? नहीं, यहाँ पे एन और एल का कोई रिलेशन नहीं है. ओके हाँ ठीक है. फिर आपका ऑन डी, इसका एनर्जी कितना हो जाएगा? 7 by 2 h क्रॉस ओमेगा. इसका कितना हो जाएगा आपका? 9 by 2 h क्रॉस ओमेगा. समझ में आ रहा ना? जस्ट आपका लैम्डा का जो फॉर्म लिखा था, लैम्डा प्लस 3 by 2 h क्रॉस ओमेगा. लैम्डा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है? 0 1 2 3, you will get this. Then you will get, for this you will get 11 by 2 h cross omega. ठीक है. Now I'll write more number. Now this is all about n equals to 1. You can take more value and you can take more L also. Now I'll take n equals to 2. For n equals to 2, let us take 5 number first. ठीक है. L का वैल्यू अगेन हम लिखेंगे 0 1 2 3 4. यहाँ पे L लैम्डा कितना हो जाएगा? 2. Exactly. Here we will get 2. Okay. Here कितना, यहाँ पे कितना मिलेगा? 3, right? 4 5 6. Am I right? ठीक है ना? बस एक बढ़ते जाएगा क्योंकि आपका एल बढ़ रहा है एक, और एन तो फिक्स्ड हो गया. अब इसका एनर्जी बताओ. अगर 2 रखोगे कितना आएगा? 2 plus 3 by 2, 7 by 2, right? So for this state and that orbit, her orbit will be, first L is 0, n is 2, so it will be 2s. N is 2, L is on, 2p. Okay, 2d, 2f, and then 2g. And you will get more number if you take more n, same n, and if you vary the tail. Okay, so for this state you will get energy 7 by 2 h cross omega. For this you will get 9 by 2 h cross omega. For this 2d you will get 11 by 2 h cross omega. 2f you will get 13 by 2 h cross omega, and for 2g you will get 15 by 2 h cross omega. Okay, अब देखो 7 by 2 ऑन डी का भी है और आपका 2s का भी है, so they are degenerate. ऑन एफ का देखो 9 by 2, 2p का देखो 9 by 2, so they have same energy, so they are degenerated. So if you expand more, you will get more degenerate state, right? So like that they have calculated and they have arranged that state. So I'll write that. ठीक है. तो आपका हार्मोनिक पोटेंशियल यूज करने के बाद जो स्टेट मिला है, पहले आपको ऑन पी मिला है, फिर आपका सॉरी ऑन एस, देन ऑन पी, राइट, देन ऑन डी 2s. ओके, देन ऑन एफ 2p, देन ऑन जी, ओके, ऑन जी 3 2D. ऑन जी 2D. 2d 2D. 2d 3s. गुड, वेरी गुड. 2d 3s. अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 रह सकता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 plus 2, 10 plus 2, राइट? 14 plus 6, here 18 plus 10 plus 2. तो यहाँ पे आपका तो पहला सर- मैजिक नंबर, हाँ यस, सर मतलब एक स्टेट में 1d 2s मतलब हाँ दे आर how is that डिजेनरेट ना, possible? you see they have energy, same energy.
1D का देखो 7/2 स्क्वायर ओमेगा और 2s का देखो 7/2 एनर्जी, they have same energy, right? So that's why they are degenerate. Degenerate means ओके they, सर, हाँ ठीक है। ओके तो सर। 2 सेकंड का इसको ऐड करोगे कितना मिलेगा 8, ठीक है। इसको ऐड करो 20, ठीक है। देन 20 20 40, देन 40 30, right? 70. So again they added they got more closed cell, but only first they have correctly predicted 2 8 and 20. So again this model failed, sorry, this potential is failed, okay, failed to predict all this magic number. Now they consider Woods-Saxon potential. Okay. So that form of this potential is minus V naught divided by 1 plus exponential R minus capital R divided by A. Okay, and V naught is 50 MeV and A is 0.52 femtometer. Okay, so if you plot this Woods and Saxon potential, how it will look like? So along x-axis is R, along vertical axis is you have potential. So if you plot it, its nature will be like this. Now when this they consider this potential and solve this Schrodinger equation, so only they predict again they correctly predict that magic number. They predicted 2 8, then 20 they predict, then they predict 40 58. Okay, 20 40 58. So only they have correctly predict first three magic number, but number of closed cell is reduced here. Then so this all three potential is failed to predict all this magic number, only they have predicted first three magic number. Then they have introduced that concept of spin orbit coupling, because when that there is orbital motion of this nucleon, at the same time there will be spinning, that similar to the spin orbit coupling in atomic physics. So when electron is making orbital motion, at the same time there is a spinning also. Same thing, same concept they have applied here also. So since during orbital motion there is a spinning, so you have to add on that term, that is spin orbit term. So whatever potential is there, हाँ सर इन वुड सेक्शन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल का ग्राफ दे दिया, उसके बाद व्हाट यू हैव टोल्ड सर? हाँ, क्या अगेन अब उन लोगों ने क्या किया, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किया। आपको अच्छा, पोटेंशियल पता है, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया है ना, सॉल्व ओके सर, कर सकते हैं, बट क्या है ना, आप लोगों का हमारा टाइम कम है और ओके क्या सर, है ओके, इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम में तो ये तो तीनों फील्ड है प्रिडिक्ट करना है ना। हाँ, इसीलिए सर। जो आपका मेन टर्म है, मैंने पहले ही बोला हूँ आपको, स्पिन ऑर्बिट का टर्म। तो नाउ दे हैव कंसीडर दैट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। ठीक है, तो whatever potential is there, they have added term spin orbit term, that is FR L dot S. Okay, so now FR is basically representing the strength of this coupling. Okay,
now you see. So if you say due to that spin orbit coupling, there is a splitting of energy level, right? So if you have p state, let us assume you have p state. So it will be splitted into two state. So this state corresponds to J value equals to mod L minus half. So that will be basically corresponds to J equals to half, and this corresponds to, because half, why half? Because P state, for P state L is 1 minus 2 is half, and this state corresponds to, I'll come in detail, J equals to mod L plus half, and that will be 3/2. Why this L minus half is on the upper state? Because I'll come in detail, because here when you are taking L plus half, so it will give more negative energy. That's why it will come lower. I'll calculate this L dot S after 5 minutes, and this term will come upward. Similarly, there will be no splitting of S, because for S you will have L is 0, so mod half minus half is will give half, mod plus half will give you half. So there will be no splitting of S due to spin orbit coupling. There will be splitting of D, and that splitting is will be higher as compared to P. I'll derive it. So for when that D state is as splitting, so J will be how much? For D, L is 2, so 2 minus half, that will be 3/2, and another will be J equals to 2 plus half, that will be 5/2. And similarly, you can calculate for F state. But while you are increasing that L, that splitting delta E will be large, that I will derive. Okay, so there will be no splitting of S, but other state will split. So it is Z minus half, right? L minus half, right? J L is, equals to L minus half, or J here you have. J equals to L mod L plus S to mod L minus S होता है ना? नहीं? Yes, sir. हाँ. यदि स्प्लिटिंग हो क्यों रही है वैसे? हाँ, स्प्लिटिंग इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि आपका ड्यू टू एलएस कपलिंग. अभी मैं कैलकुलेट करूंगा एल डॉट एस, तो पता चल जाएगा आपको स्प्लिटिंग क्यों हो रहा है. अभी एल डॉट एस को, एस का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो फिर हम देखेंगे जब एल का वैल्यू जे का वैल्यू एल प्लस हाफ, तो उसके लिए जो एल डॉट एस का वैल्यू है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो वी आर है उसके साथ आप एल डॉट एस को इंक्लूड कर रहे हो ना, तो एल डॉट एस का जो वैल्यू जब जे इक्वल्स टू एल प्लस हाफ है ना, तो जितना होगा वो डिफरेंट होगा जब जे इक्वल्स टू एल माइनस हाफ, वो हम डिराइव करेंगे. तो टोटल, हाँ, ये जे का कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब 1/2 और 3/2, ये आ क्या रहा है जे एग्जैक्ट? हाँ, जे टोटल एंगुलर मोमेंटम आपका. अच्छा, टोटल, हाँ, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या करते हैं, मॉड एल प्लस एस टू मॉड एल माइनस एस तक वेरी करते हैं ना. एस कितना है यहाँ पे, हाफ है, और एल वेरी हो रहा है ना. ठीक है. हाँ, Sir, तो फिर यस, why don't we have yes, don't we have splitting? हाँ, Yes, Yes. don't we have? एस स्प्लिटिंग, राइट. Yes, sir. हाँ, because you see, for S, so J will be how much? There are two possibilities, right? J equals to mod L minus half. So L is 0, so mod half minus half कितना होता है, हाफ ही हो जाता है. और अगर J equals to L plus half लोगे तो सेम देगा आपका, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, देखो, Okay. है ना. Okay. Okay. So there is no splitting because L is 0. अगर L 0 है तो फिर कैसे स्प्लिट ऑर्बिट कपलिंग होगा, है ना, नहीं होगा ना, बिकॉज एल डॉट एस लिख रहे हो, जब एल ही 0 है तो फिर कपलिंग कैसे होगा, नहीं होगा. अब आप लोगों ने कैलकुलेट किए हो, तो सर करवाया होगा एल डॉट एस, राइट, एंगुलर मोमेंटम में. तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम जे इक्वल्स टू क्या होता है, एल प्लस एस. तो यहाँ से मैं दो चीज प्रूव करूंगा कि आपका जब जे का वैल्यू एल प्लस हाफ होता है तो एल डॉट एस डिफरेंट होगा, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसका, और जब अब जे का वैल्यू एल माइनस हाफ होगा तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल डॉट एस डिफरेंट होगा. दैट्स व्हाई दे आर स्प्लिटिंग, and that also I'll prove that
while you are increasing that L value, that splitting will be large. यहाँ से टोटल जो आपका J होता है L डॉट S होता है, आप यहाँ से कैलकुलेट करो, आपका J डॉट J कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको L प्लस S डॉट L प्लस S है ना, तो यहाँ पे J डॉट J J स्क्वायर हो जाता है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा L स्क्वायर प्लस S स्क्वायर प्लस 2ls एग्जैक्टली, हाँ 2L डॉट S, राइट। यहाँ से आप कैलकुलेट करो L डॉट S, तो J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर डिवाइड बाई 2, राइट। नाउ जब आप इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो एक क्या हो जाएगा, J इंटू J प्लस 1 H का स्क्वायर माइनस L L इंटू, into हाँ माइनस S इंटू S प्लस 1 H क्रॉस स्क्वायर, राइट। So I have taken H as H cat square actually common, because here also you will get, here also you will get, here also you will get. So actually H cat square is ये आपका H cat square बाहर है, ठीक है, डिवाइड बाई 2। ना आप क्या करो, L डॉट S का वैल्यू कैलकुलेट करो जब J इक्वल्स टू L प्लस हाफ, है ना, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, राइट। J कितना हो सकता है, L प्लस हाफ हो सकता है जब दोनों पैरेलल है, अब दोनों अगर एंटी पैरेलल है तो L माइनस हाफ हो सकता है। तो L डॉट S when J equals to L प्लस हाफ, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म से L प्लस हाफ L प्लस 3/2, right, then you will have L square, L into L plus 1, so I am breaking that bracket, L square minus L, and S into S plus 1 will be how much, S is half, right, so half into 3/2, so it will give 3/4 exactly, and you will have H cat square divided by 2। जरा इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो सर यहाँ से इधर L, इधर J इक्वल्स टू L प्लस हाफ क्यों रखा गया है? हाँ, तो 2 पॉसिबिलिटी है, J L प्लस हाफ हो सकते हैं और L माइनस हाफ हो सकते हैं, है ना, हाँ। ओके ओके सर, ओके सर। तो जब हाफ L प्लस हाफ रखोगे, ये वैल्यू कितना आ रहा है, तो देखो यहाँ से देखो L स्क्वायर है, फिर आपका क्या आ जाएंगे यहाँ पे, L स्क्वायर के बाद 2L आ जाएंगे, बिकॉज 3/2L प्लस हाफ L, सो 2L आ जाएंगे प्लस 3/4, राइट, सो L स्क्वायर विल बी कैंसिल, हाँ 3/4 विल बी कैंसिल, एग्जैक्टली यू विल गेट L H का स्क्वायर बाई 2, है ना, क्योंकि यहाँ पे L स्क्वायर हो आ जाएगा, 2L आ जाएगा, 3/4 will be cancelled, L square will be cancelled, 2L minus L will give you L H cat square, and डिनोमिनेटर में आपका हाफ है। H क्रॉस स्क्वायर पूरे ब्रैकेट को है ना? हाँ एग्जैक्टली, पूरा ब्रैकेट के बाहर है, नहीं तो डायमेंशनली फेल हो जाएगा ना, ठीक है। फिर आपका L डॉट S का वैल्यू आप निकालो J इक्वल्स टू L माइनस हाफ के लिए, ठीक है, तो हाफ के लिए करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, L प्लस हाफ प्लस L माइनस हाफ, राइट, तो बेसिकली विल गेट L स्क्वायर माइनस 1/4, राइट, नो, yes sir, L square minus 1/4, then you will have L square minus L minus 3/4 H cat square डिवाइड बाई 2, तो कितना आ रहा है देखो, L square will be cancelled, minus minus L L plus 1 into by H 2, cut right, square by 2, yes sir, minus L plus 1 H cat square by 2, तो देखो जब ये J इक्वल्स टू L माइनस हाफ है तो ये वैल्यू आ रहा है, और जब ये J इक्वल्स टू L प्लस हाफ है तो ये वैल्यू आ रहा है। अब आपका देखो L प्लस हाफ में नीचे क्यों लिखा था, क्योंकि आपका माइनस FR L डॉट S था ना, तो माइनस FR L डॉट S
और ये आपका प्लस है, तो बेसिकली ये जो है आपका जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो आपका क्या हो रहा है, नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है ना, समझे आप? क्योंकि जब आप लिख रहे हो भी लिख रहे हो आप वी आर माइनस एफ एल डॉट एस, ओके है ना? तो एल डॉट एस जब जे इक्वल्स टू हाफ एल प्लस हाफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो टर्म है एनर्जी टर्म ये आपका नेगेटिव हो रहा है, और जब आप एल माइनस हाफ है तो आपका ये टर्म क्या हो जाएगा, बेसिकली पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, तो वो अपर की तरफ शिफ्ट करेगा, एल प्लस हाफ नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है? अब जो स्प्लिटिंग है, सर हाँ यस, तो ये क्या बोला सर लास्ट पॉइंट में, हाँ जो मतलब दो आपका मैं अलग अलग लिख। यस सर। देखो जे एल डॉट एस का मैंने वैल्यू निकाला है ना, यस सर। एल डॉट एस का वैल्यू जब जे इक्वल टू एल प्लस हाफ तो पॉजिटिव आ रहा यस है ना? सर। और जब एल माइनस हाफ तो आपका ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है। अब जब आप एनर्जी लिखोगे है ना, एक्चुअली एनर्जी स्प्लिटिंग में दो लेवल लिख रहे हो ना, एक एल माइनस एल प्लस हाफ नीचे में शिफ्ट हो रहा है और एल प्लस हाफ ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब एल प्लस हाफ ले रहे हो तो नीचे की तरफ क्यू शिफ्ट हो रहा है, और एल माइनस हाफ ले रहे हो तो ऊपर की तरफ क्यू शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज ओके सर। हाँ, बिकॉज जो पोटेंशियल है आपका वी आर माइनस एफ एल डॉट एस, तो एल डॉट एस जब जे इक्वल टू एल प्लस हाफ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव। हाँ, तो ये एनर्जी एक्चुअली क्या कर रहा है, लोअर कर रहा है। यस जब एल सर, माइनस ये हाफ करोगे तो ये आपका ऐड क्या कर ऑन रहा कर दे है, रहा है। हाँ, ओके तो सर। इसलिए अब जो स्प्लिटिंग का जो विड्थ है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेल्टा ई, दैट विल बेसिकली डिपेंड्स ऑन व्हाट, एफ आर एफ आर एल डॉट एस जब जे इक्वल्स टू एल प्लस हाफ माइनस एल डॉट एस जब जे इक्वल्स टू एल माइनस हाफ, है ना? यही तो बेसिकली स्प्लिट कर रहा है आपका एल डॉट एस और एल माइनस एस। तो यहाँ से आप देखना कैलकुलेट करोगे तो एफ आर बाई टू एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर आएगा। तो जैसे जैसे आपका एल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्प्लिटिंग जो है डेल्टा ई बढ़ता जाएगा। तो ऑन पी कोई पी स्टेट में जितना स्प्लिटिंग है डी उससे ज़्यादा होगा, एफ उससे और ज़्यादा होगा, जी उससे और ज़्यादा होगा। अब जो स्प्लिटिंग का ये करके जो एनर्जी लेवल मिला है उसको मैं ड्रॉ करूंगा। फिर टाइम हो गया क्या? ओके, अच्छा टाइम में ही हो गया आप लोगों का। फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे जो आपका नेट में आने वाले हैं। एक प्रॉब्लम एक्चुअली थियोरी पार्ट था। सर आज न्यूक्लियर का दोनों प्लस होगा। दोनों इसीलिए है क्योंकि आपका एक पूरा सेल मॉडल को खत्म करना है ना, अभी तो थियोरी पार्ट हुई है, ठीक है ना? अब प्रॉब्लम करेंगे कि जो प्रॉब्लम ही तो मेन है ना आपका एग्जाम में, तो पूरा सेल मॉडल खत्म हो जाएगा एंड होपफुली विल गेट 5 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम हियर। Sir, यस, J equal to L minus हाँ, 1 by t, it is in upper state. 1 मिनट, जस्ट टेल मी। J equal to L minus half, na? हाँ It is in upper state. हाँ, यहाँ पर स्टेट, यस। तो उसको अगर लेवल को आप जब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को ऐड करके जो मिला है तो ऑनेस को क्या मिल रहा है, ऑनेस हाफ मिला है। तो बेसिकली जे इज हाफ हेयर, देन ऑन पी स्प्लिट हो गया आपका दो पार्ट में, है ना? ऑन पी इट विल बी ऑन पी 3/2, then you will have on P half, then you will have on D, and in between on D you will have 2s। तो आपका on D है, आपका 2s है। on D में कितना हो जाएगा, on D 5/2, then you will have 2s half on D 3/2, ठीक है? नेक्स्ट जो है आपका F, तो इसका ऊपर आएगा, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, F का आएगा यहाँ पे
ठीक है, और एफ के बीच में आपका क्या आ जाएगा, पी वाला भी आएगा। तो आपको ऑन एफ 7/2, देन यू विल हैव 2p। 2p का कितना है, 2p 3/2, ऑन एफ 5/2, 2p हाफ। ओके, देन यू विल हैव ऑन जी 9/2, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, ऑन जी 9/2, then you will have on G 7/2. Okay, then you will have two D state, 2D 5/2, 2D 3/2. Then you will have 3S state, 3S half. Then you will have on H. Now we'll see, यहाँ पे कितना रह सकते हैं, 2, राइट। हाफ तो कितना रह सकते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम 2 न्यूक्लियन रह सकते हैं, 2J + 1। ओके, हाफ मतलब 2 रह सकते हैं यहाँ पे कितना रह सकते हैं, 2J + 1, सो 2 × 3/2 + 1, यहाँ पे 4 रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे कितना रह सकता है, 2 रह सकता है। यहाँ पे कितना रह सकता है, 6 रह सकता है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक क्लोज सेल है 2, एक क्लोज सेल है 4 + 2 6, सो 2 + 6 8, तो यहाँ पे एक क्लोज सेल बन रहा है। तो 2 मैजिक नंबर, इन दोनों को ऐड करके 8 मिल रहा है। फिर आपका यह इसको ऐड करो, 6 + 2 + 4, हाउ मच, 12, राइट। तो यहाँ पे एक क्लोज सेल बन रहा है 20। सर हाँ सर आप ये कैसे डिसाइड करें कि नीचे में 4 है ऊपर में 2 है? हाँ, ये आपका L + हाफ है ना, यस सर। यही तो मैं प्रूव कर रहा था वहाँ पे L.S का। तो जो आपका L + हाफ है, L कितना है, P है, P के लिए L Yes, कितना sir. है, हाँ, 1 + हाफ 3/2, वही तो मैं प्रूव किया ना वहाँ पे। नो सर ये तो समझ में आया, पर इसमें 4 ही रह सकते हैं, ये हाँ, कैसे? तो ये तो आपका स्टेट है ना, एक स्टेट में कितना रह सकते हैं, 2J + 1 नंबर ऑफ न्यूक्लियन, तो J कितना है, 3, तो 3/2 × 3/2 + 1। ओके सर। तो यहाँ पे 2 × हाफ 2, तो 20 तक हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, 8 है ना, फिर आपका 4 है, यहाँ पे 6 है, राइट, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है। इसको काउंट करो, तो ये एक्चुअली इसको एक क्लोज सेल माना गया है ऑन एफ 7/2, क्योंकि क्लोज सेल कहाँ पे बन रहा है, मेरा ड्राइंग परफेक्ट नहीं हुआ है। क्लोज सेल वहाँ पे बन रहा है जब 2 लेवल के बीच में मतलब एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा हो। तो यहाँ पे लग रहा है कि एनर्जी गैप, ड्राइंग लग रहा है कि एनर्जी गैप कम है, लेकिन एक्चुअली एक एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो इसलिए एक को क्लोज सेल मान रहा है। यहाँ पे क्या है, ये जो 2 लेवल के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो इसको एक क्लोज सेल मान रहा है। तो 20 के बाद 8 ऐड करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, 28, तो एक मैजिक नंबर है। यहाँ तक जो है आपका एक क्लोज सेल बनेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट वाला आपका जो ये है मैजिक नंबर, वो मिलेगा। यहाँ ऐड करो 28 + 4। सर जहाँ मैजिक नंबर मिल रहा है वहाँ एक क्लोज शेल हो जाता है क्या? मैजिक नंबर नहीं, क्लोज सेल उसी हिसाब से डिफाइन किया जाता है जहाँ पे सपोज मान लो आपका लेवल है, ये लेवल और नेक्स्ट लेवल के बीच में जब काफ़ी ज़्यादा गैप है तो इसको माना जाता है क्लोज सेल, है ना। जब ये सेपरेशन बहुत कम है तो इसको क्लोज सेल माना नहीं जाता है, इसको सारे को एक साथ काउंट किया जाता है ना, बिकॉज दिस सेपरेशन इज सो स्मॉल, है ना। मेरा ड्राइंग परफेक्ट नहीं हुआ है, बट ये जो गैप है काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इसको एक क्लोज सेल मान रहा है। इनको क्लोज सेल नहीं मान रहा है क्योंकि इन तीनों को ऐड करके क्लोज सेल मान रहा है, क्योंकि इनका गैप जो है वेरी स्मॉल है। यहाँ पे ड्राइंग में लग रहा है काफ़ी गैप है, बट गैप ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे गैप ज़्यादा है। सर क्लोज शेल का क्या इधर सिग्निफिकेंस है, मतलब क्लोज शेल क्यों कहा जा रहा है? क्लोज सेल इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपका क्या है, ये आप जब फील्ड हो जाएगा, है यस ना, सर। तो फील्ड होने का मतलब क्या है, वो सेल क्लोज हो गया आपका। ओह ओके सर। ठीक है।
अगर फील्ड आपका अनफील्ड है तो फिर आपका वो क्लोज सेल नहीं है। गैपिंग स्पेसिंग मतलब आप डायग्राम के अनुसार बोल रहे हैं या 2 और 6 नहीं नहीं डायग्राम के अनुसार Diagram. नहीं, यहाँ पे आपका एनर्जी सेपरेशन देखोगे दो स्टेट के बीच में डेल्टा ई ये काफी ज्यादा जब होता है तब उसको बोलते हैं कि ये दोनों सेल जो है वो सेपरेटेड है ना। तो एक जो ये लेवल जो है क्लोज सेल देगा, बट ये लेवल और ये लेवल मतलब ए लेवल को आप क्लोज सेल नहीं मान सकते क्योंकि ये सेपरेशन काफी स्मॉल है, तो सारे को काउंट करके एक क्लोज सेल होगा। जो आपका नेक्स्ट लेवल का जो एनर्जी है जब इन दोनों का सेपरेशन आपका ज्यादा होगा तभी क्लोज सेल मानेगा, बट इनको आप क्लोज सेल नहीं मान सकते, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। देखो मैंने ऐड किया हूँ, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल सेपरेशन काफी स्मॉल है, तो तीनों को ऐड करके मैंने 20 लिखा हूँ, ठीक है, ये आपका सर क्लोज सेल। इसमें हाँ 2s में जो आपने ड्रॉ किया है वो 2s 1d के बीच में से जा रहा है और वो 3s जो है वो 2d से ऊपर है एनर्जी लेवल। 3s हाँ जो है एनर्जी लेवल वो ऊपर रहेगा 2d की एनर्जी से, और इसमें 1d को मतलब 1d के बीच में आ रहा है दोनों लेवल्स के, l प्लस 1/2 और इसमें l माइनस हाफ में। अच्छा मतलब ये पूछना था, ये क्वेश्चन है कि हाँ ये एनर्जी आपका क्या है ना, ये एनर्जी आपका इसका ज्यादा है 3s आपका 3s की एनर्जी 2d के लेवल से ज्यादा होगी। ज्यादा है, डीजेनरेशन वहाँ पर नहीं है। और जी की उनसे कम होगी, हाँ 1G की उससे कम होगी क्योंकि 1G हाँ तो जी का उसका उससे कम होगा। F उससे कम। हाँ तो एग्जैक्टली मतलब करेक्ट है, ये करेक्ट है। हाँ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है क्या? तो ये हाँ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट नहीं, जो आपका मॉडल है ना calculation है। वहाँ से कैलकुलेट करके इसको ड्रॉ किया गया है, ये ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आप कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये ऐसे हम अरेंज करेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जब काउंट किया गया है तो पूरा जो आपका मैजिक नंबर है फिल करके आपको पूरा सेटिस्फाई किया है इस मॉडल में। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम करेंगे तो पता चल जाएगा अपना। तो एग्जैक्टली ये आपको याद करना पड़ेगा, ये जो आपका ड्राइंग है, ठीक है, इसके बेस में हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी स्टॉप करते हैं फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम से, ठीक है। सर ये जब काउंट करते हैं तो नीचे वाला 2 है, ऊपर हम ऐड कर रहे हैं 4 और 2 और नीचे का 2 8। ऊपर जब काउंट कर रहे हैं तब सर 6 2 एंड 4 10। ओ अच्छा पूरा ही काउंट कर। देखो इन दोनों को एक साथ ले रहा है, इसको क्लोज सेल नहीं मान रहा हूँ क्योंकि ये सेपरेशन जो है सो स्मॉल, तो इसको आपको काउंट करना पड़ेगा एक सेल, उसके बाद ये आपका क्लोज बनेगा क्योंकि इनके बाद इनका इन दोनों सेल का जो लेवल का जो सेपरेशन काफी ज्यादा है, तो इसके ऊपर ये नेक्स्ट सेल स्टार्ट हो जाएगा, बट ये लेवल क्लोज सेल नहीं देगा क्योंकि ये तीनों का लेवल का जो सेपरेशन है काफी स्मॉल है, तो तीनों को मिला के आपका क्या मिलेगा, एक क्लोज सेल मिलेगा। फर्दर यहाँ पे जब करोगे जो ऑन है 7/2 और 2p3/2 इनके बीच में काफी ज्यादा गैप है, तो इसको एक लेवल को काउंट करके क्लोज सेल बना सकते हो। फर्दर आप ये जो लेवल है इनका सेपरेशन काफी कम है, तो इनको सारे को इंक्लूड करके एक आपका क्लोज सेल बनेगा। सर लेकिन अगर क्लोज सेल होगा और नहीं होगा, अंत में तो हम सभी ऐड ही कर रहे हैं ना, मतलब यहाँ भी अभी स्पेसिंग आप बता रहे हैं ना 1p 1p एग्जैक्टली ऐड कर रहा है, बट जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, जो आपका मैजिक नंबर पूरा मैजिक नंबर अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो एक मैजिक नंबर आ जाएगा जो फेल्ड है ना, एक्सपेरिमेंटली प्रूव ही नहीं होगा। सपोज मान लो आप इसको क्लोज सेल मान रहे हो 6 को, तो 2 + 8 कितना हो गया, 10 + 6 16 एक मैजिक नंबर आएगा, तो नहीं है ना। तो वो क्यों नहीं है, क्योंकि इनको तीनों को ऐड कर रहे हैं इसीलिए, क्योंकि इनका सेपरेशन जो है वो बहुत कम है, तो इसीलिए इन तीनों को मिला के एक आपका काउंट कर रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि आपका मैजिक हमने ग्रुपिंग ही ऐसे की है कि हमें मैजिक नंबर मिलना चाहिए। ग्रुपिंग इसीलिए किया है ना क्योंकि जब लेवल का बीच में बहुत स्मॉल है, मतलब वो आपको दिखेगा भी नहीं, इतना स्मॉल है इनका सेपरेशन, तो उसको इसीलिए ग्रुप किया गया है, लॉजिक है इसके पीछे। इन द एंड वो मैजिक नंबर ही दे रहे हैं। हाँ मैजिक नंबर ही दिया है, बट क्या है ये जो मॉडल है प्योरली इंपेरिकल मॉडल है ना, तो काफी कंफ्यूजन हो सकता है, एजम्पशन के बेस में है। तो नेक्स्ट क्लास में अभी शुरू करेंगे प्रॉब्लम सॉल्यूशन, है ना, 5 मिनट ब्रेक के बाद, ठीक है। ओके सर।